Hi guys, how are you? See, I'm jubilant. I'm fantastic. Okay? ओके गाइस, आज का वीडियो थोड़ा फ़नी होने वाला है क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे बोला है कि क्या आप इस पे वीडियो बना सकती हैं कि कैसे डायरेक्ट इंग्लिश में सोचें और कैसे इंग्लिश में सोचें और कैसे फ्लुएंटली इंग्लिश में बोलें। Because they said to me, because we don't have English ambience, in spite of if we have to think in English, it is not possible. How is possible to think in English? We don't have any partner to speak in English. We don't have English ambience. That it is very tough. But friends, I will explain about it. It is not tough. It is not bugbear. First of all, I would like to say English language is not like bugbear. English speaking is not like rocket of science. You can think, you can speak. But उसके पहले आपको एक काम करना होगा. आपको मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाऊं और आप घर बैठे इंग्लिश सीखें. ओके गाइज़. Okay, now I'm going to explain about how to think direct in English. If you don't have English ambience, you need not to worry about that because I am here. I will make you understand. First of all, I would like to tell one story so that you can learn from that story. Okay, there were two friends, Kallu and Mathallu. Kallu, Mathallu, one day both decided let's learn English, okay? And they started learning English. Kallu had different quality, and Mathallu had different quality. And but what was the quality of Kallu? वो सोचता था कि मैं जब भी इंग्लिश बोलूँ तो करेक्ट और परफेक्ट इंग्लिश बोलूँ. Okay, whenever he used to speak in English, he tried to speak with conscious, and he tried to always speak like correct English. वो हमेशा conscious हो जाता before speaking English. And on the other hand, there was Mathallu. Mathallu was a very funny guy, and he take very lightly, and he started his journey how to speak in English. And whenever he started speaking English, he think about it. I have to speak only in English. It doesn't matter I will speak correct or incorrect English, because English is not my mother tongue. Hindi is our mother tongue. Hindi, Telugu, Tamil, Marathi is our mother tongue. That's why how is possible that when we started our journey, then how is possible then we will be articulating this language very soon? It will take time. So मठल्लू जो था उसको बस ये था कि मुझे इंग्लिश बोलनी है विद कॉन्फिडेंस. वो कभी कभी गलत भी बोलता, बट जब भी बोलता कॉन्फिडेंस के साथ बोलता रहता. तो क्या हुआ, जो मठल्लू जी थे वो धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस लूज करते गए. उनका ईगो हर्ट हुआ कि ओ माय गॉड, मैं तो इंग्लिश बोल रहा हूँ, कभी गलत कभी सही. तो उसने क्या किया, उसने गिव अप कर दिया. उसने इंग्लिश बोलना छोड़ के और अपने मदर टंग में वापस आ गए. मगर जो हमारे मठल्लू जी थे, मठल्लू जी कंटिन्यू लगे रहे अपनी इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी को, उन्होंने छोड़ा नहीं. तो इससे क्या हुआ कि मठल्लू बिकेम articulate in English language. Okay, and for the articulation he never think about that कि हमें जब भी इंग्लिश बोलना है परफेक्ट बोलना है. गाइज, अभी हमने अपनी जर्नी स्टार्ट किया है, तो आप बोलो, कुछ भी बोलो, सोचो, बोलो, मुंह खोलो तो इंग्लिश में खोलो. जब सोचोगे तब मुंह खोलोगे, और जब मुंह खोलोगे तभी तो बोलोगे. इसलिए मैं कहती हूँ गाइस कि देयर इज़ नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि जब भी हम बोले एकदम परफेक्ट बोले इंग्लिश. ओके, don't worry about that. If you don't have ambience, you can think. Today I'm gonna explain about it. And guys, you have to decide, do you wanna become like Kallu or Mathallu? I like Mathallu style, really. And second thing is,
suppose that you don't have English ambience, your family always speak in Hindi, and your brother, sister, and friends they always speak in English at home, and you don't have partner so that you can practice with them, then you need not to worry. Think in English. It's not bugbear, it's not rocket of science. I'm going to explain about it. Like, suppose that there is a table in front of you, and on the table there was a basket. There was a basket, and in the basket you will find different types of fruits. Okay, different types of fruits. And when you look at the fruits, इस पे आप पॉइंट करिए. It is very important line. When you look at the fruit, think about their name in English, not in your mother tongue, like banana, mango. No, apple. Direct think about apple. That is apple. That is banana. That is mango. That is orange. Okay. एंड जब भी आपको प्यास लगे, सपोज दैट आपको प्यास लगती है तो आप हिंदी में बोलते हो ना, मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी. मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थर्स्टी. तो हम अपने हमारे दिमाग में क्या चलता है, व्हाट इज चर्निंग. English words should be churning in our mind all time. बिकॉज अगर उस समय आप सोचते हो हिंदी में कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुंह जब खोलोगे तो अपने मदर टंग में ही बोलोगे. On the other hand, if you think in your mind that I am feeling thirsty, I need a glass of water, then definitely you will speak in English, effortless English. This is the secret of think in English and speak. And guys, you can speak without any partner. Initially, when you started your journey, then you can ask yourself, you can reply yourself, like, where is my book? And you reply yourself, your book is on the table. Okay, sounds funny, but it is really helpful. And try to implement this idea, then definitely you will be articulate in this language. You need not to worry about English language. Yeah, English is not our mother tongue. And second thing, English is not symbol of intelligence. Okay, कि एक बंदा पीएचडी किया हुआ है और एक अंग्रेज़ का बच्चा है जो बचपन से इंग्लिश बोल रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि जो पीएचडी किया हुआ है इंसान, इफ़ ही इज़ नॉट एबल टू स्पीक, ही और शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है. और इधर एक बच्चा जो है जो बचपन से इंग्लिश बोलता है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है, अभी वो छोटा सा बच्चा है, बट वो इंग्लिश बोल ले रहा है, इसका ये मतलब थोड़ी ना हुआ कि वो इंटेलिजेंट है. नो, बिकॉज ऑफ एम्बियंस. हम बचपन से पानी बोलते हैं और वो बचपन से वाटर बोलते हैं. हम बचपन से माता पिता दादा दादी बोलते हैं, एंड दे स्पीक ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सिंस चाइल्डहुड. तो फिर हम ये कैसे सोच लेते हैं कि नो, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश लाइक नेटिव स्पीकर. या यू कैन, बट you have to give your 100%. You have to give your 100%, then definitely you will speak English like native speaker. But guys, with confidence, like Mathallu, don't try to follow like Kallu. मठल्लू का स्टाइल अच्छा है. इंग्लिश बोल रहा हूँ भाई, इंग्लिश इज़ नॉट माई मदर टंग. इवन मैं कोशिश तो कर रहा हूँ बोलने की. आप ये सोचो और स्टार्ट योर जर्नी. ओके, इफ पीपल लाफ एट यू, ओ माई गॉड, यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेज हो, वाई आर यू स्पीकिंग इन इंग्लिश एट होम, देन यू कैन से भाई मेरे, बिकॉज ऑफ I have to go outside, then I have to speak in English. If I don't know how to speak in English, how to I will deliver my thoughts with other people. That's why I'm learning English. For good job, you must know English. For attending PTM, you must know English. That's why we can't deny the power of English language. And you can think and you can speak. It's not like rocket science. And my dear friends, initially when you started your journey how to speak in English fluently, speak small sentences. Try to create small sentences and speak like where is my book and where is my pencil, and reply yourself, your book is on the table, your pencil on the table. You can say like this. एंड पानी को आप जब देखो तो पानी नहीं सोचो अपने माइंड में, उसको सोचो वाटर. थिंक इन योर माइंड. जब इंग्लिश आपके दिमाग में चलेगा
when English will churn in your mind all time, then definitely you will speak effortless English. आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि oh my god I'm gonna speak in English, oh my god what I to do. No, that's what I'm saying. Easy, it's a very easy. डजेंट मैटर, कोई नहीं बोल रहा है इंग्लिश, ना बोले, आप बोलो, खुद से बोलो, खुद। मैं ये आई एम नॉट सेइंग दैट यू मस्ट स्पीक इन इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ मिरर। नहीं यार, मिरर के सामने खड़े होकर बोलो ना तो हंसी आती है, लगता है हम किसी और से बात कर रहे हैं। नो, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एनी टाइम. While doing any work, you can speak in English. In the kitchen, in the bathroom, in your bedroom, and anywhere you can. English, you can speak in English because English is everywhere. But सोचने की ये ज़रूरत है कि आपको you have to think in English, तभी आप बोल पाओगे. If you wanna be articulate in this language, in English language, you have to think. And for the fluency, you have to speak. क्योंकि हम बचपन से इंग्लिश तो बोलते नहीं हैं, हमारी मदर टंग हिंदी है, तो बट नेचुरल है कि हम अपने हिंदी में ही, हमको कोई हिंदी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीखने की ज़रूरत नहीं है. वी आर सफिशिएंट, वी नो हाउ टू स्पीक इन हिंदी. और हमें इंग्लिश इसलिए सीखना पड़ता है कि इंग्लिश इज़ नॉट आवर मदर टंग. डोंट वरी, ओके, इट इज़ very good idea and you must follow and you will find changes in yourself after couple of months, believe me. And believe me guys, watch my videos and like my videos and subscribe, then I will make a very helpful video. So my lovely viewers, you can learn English at your home. Okay, bye bye, keep practicing and don't worry about those types of people, they laugh at you. Don't give up. Okay, best of luck, bye bye, take care.